Very good morning to all my students. Today I will explain about the mass extinction in my lecture. Mass extinction means the organisms probably 95 to 98% that species would be vanished or wiped out from the global world or from the planet, and that one would be explained in the term of mass extinction. In our dictionary, you find two words. One word is named as the distinction, other word is called as extinction. In distinctions means particularly the species which are remaining in the planet are observable in everywhere. That means that type of species are well distinct. So the term distinction is used for this sake. But in extinct, that means the species which are remaining for a prolonged period in the planet or universe, but in a sudden that type of species would be vanished from the planet or universe or from the global world, and that one can be explained in the term of extinction. Your dinosaurs already extinct from the world. They are remaining in the Jurassic period, but in that day you find that species. But nowadays that species is not available. So those animals are extinct. In now it will be called as extinction. Entire mass of the dinosaurs will be extinct out. Okay? And they will be not remaining in nowadays. That is considered in the extinction. That will be special due to mass wiped out from the universe or planet. You can say that is called as the mass extinction. Okay? First of all, you know the background of extinction. Although life is amazing, the resilient, but in the long history of the planet, almost all life forms have become extinct, 95% or more at some time. Fortunately, life always seems to rebound, and so far each rebound brought significant increase in biological complexity and diversity. For example, the Cambrian era, it is one era, Cambrian era, and starting from 500 million years ago, followed what was possible the greatest extinction in the history of the earth. But the Cambrian introduced a whole variety of creatures, and most important the basic body structures that shape the morphology of all living creatures today. What is the definition of the mass extinction? A mass extinction can be defined as a time period in which a large percentage of all known species living at the time goes to extinct or is completely wiped out. And there the several the causes for the mass extinction, such as climate change, geological catastrophes, such as the large amounts of volcanic eruption, or even the meteor strikes on the earth's surface. ये जो लुप्त होइतिबा जो प्रक्रिया साधारणतः ए प्रक्रिया रे बहु प्राणी
पृथ्वी पृष्ठ लुप्त हो जाती। लुप्त गोटे प्रकार दुई प्रकार स्पेसीज लुप्त हवा कथा तो अलग कथा। एक समय अनेक गुड़िया स्पेसीज तो समसामयिक समय यदि विलुप्त होती से विलुप्त हवा पाई जो प्रक्रिया हुए ताको कहती एक्सटिंक्शन। एवं से प्रक्रिया यदि समूह आकार रे हुए ताको समूह विलुप्त प्रक्रिया कहा जाए, जहाँ को इंग्लिश रे कहूची मास एक्सटिंक्शन। ताले को माने एक्सटेंड होती ना स्पेसीज माने बा प्राणी माने बा हमर किछि उद्भिद माने साधारणतः एक्सटेंड हो जाती विलुप्त हो जाती से आउ देखा मिले ना। यह पछरे अनेक गुड़िए कारण थाई पारे। से कारण विषय आम आज विश्लेषण करबा को कारण जोगु से प्रकार स्पेसीज गुडा प्लांट होता बा एनिमल होता से फ्लोरा रे जाऊ बा फौना रे जाऊ कि से माने काहे विलुप्त होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आम विभिन्न प्रकार कारण हो पारे तथा तुमर ये जो परिवेश परिवर्तन जो पागर परिवर्तन जो आम कहूँ क्लाइमेटिक चेंज बा तुमर जो जियोलॉजी जो कैटास्ट्रोफिस रही जो कैटास्ट्रोफिस माने या दे जो भूस्खलन हुए माटी तल को दबी जीवा बा ये हुए साधारणतः भूमिकंप समय हुए तो अर्थ प्लेटा आउ पूरा पूरी बैलेंस रहे इम्बालांस हो जाए किसी अंश तल को दबिकी विलुप्त हो जाती से प्राणी माने किबा पृथ्वी मंडल भीतर को केते केमिति उल्का पिंड गुड़ाक आसी बाड़े हुए जो मेट्रो स्ट्राइक्स कहूँ उल्का पिंड आघात है जो पृथ्वी स्तर में हुए से किसी प्राणी विलुप्त होती। ये समूह विलुप्तर कारण गोटे बड़ बड़ घटना मान को लेकिन ये निआर पोड़ी होकर मरवा नुहे कि तुमर कि आमर एम साइक्लोन जमी निकट में है से साइक्लोन किसी लोक कि जीव लुप्त हो गले ताकू नुह कि समूह भाव में जदि कौन से एक विराट आकार गोटे घटना घटला यथा तुम मेट्रो स्ट्राइक्स हो पारे बा तुम वोल्कानो इरप्शन हो पारे आम कहूँ कैटास्ट्रोफिस बा पुणी आमर यार्थ एकड़ सेकड़ हो पारे बा हिम प्रवाह होकर किसी अंचल मास आकार मासिक आकार किसी नष्ट हो जाई पारे ये परिप्रेक्षी रे आमे सेठी कहूँ मास एक्सटिंक्शन। ओके एंड देयर इज इवन एविडेंस to suggest that microbes may have set up or sped up or contributed to some of the mass extinction that are known throughout the geologic time scale. एक बेस रे मो कहि पारे किछि माइक्रोब्स अछंती किछि एमती कजिंग एजेंट अछंती से माने मासिक आकार रे धन जीवन नष्ट करूछंती जथा आमे देखुचे निकट रे जो चाली छी आमर कोविड-19 ए कोविड-19 रो इन्फेक्शन फल पूरा पूरी सारा पृथ्वी जनसंख्या विलुप्त होगा जाउछि। तेणु ए विलुप्त प्रक्रिया कोनोसी माने नेचुरल कैलामिटी जरिया रे नुह बा कोनोसी प्रकार कैटास्ट्रोफिस जरिया रे नुह या मात्र घटुछि ड्यू टू सम व्हाट द माइक्रोब्स तथा इट इज द कोविड-19 को किसी समय पर किसी दिन पूर्व जानी गोटे प्लेग जरिया किसी लोग जाते कलेरा जाते ये बैक्टेरिया भाइरस फंगस एवं यही मान सब कजिंग एजेंट्स जहाँ जरिया जनसमाज प्राणी समाज विलुप्त होती। तेणु ये मान को आम कहू एम फैक्टर्स जो मैंने विलुप्त प्रक्रिया कारण होती है। तेणु आम जानिले केवल आज नुहे यही वर्ष कि 2 वर्ष है यह घटना घटुनी जुग जुग धरी आम जदि ऑब्जर्वेशन नबा यही पृथ्वी पृष्ठ अनेक उद्भिद अनेक प्राणी विलुप्त हो सारे एवं जो नुआ प्रकार प्राणी नुआ प्रकार उद्भिद जो नुआ प्रकार स्पेसीज आसुचंती दे आर आल्सो रेजिस्ट दिस टाइप ऑफ द कैलामिटीज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ओके व्हिच आर कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स और कॉज्ड बाय द नेचुरल कैलामिटीज। से जो रेजिस्ट कर जो प्राणी माने से माने प्रकृत में सक्सेसफुल हो पारुचंती एवं से माने को आमे कहूछु ताकर ए तांको जगु ताकर कोन तांकर एक्जिस्टेंस रहउची एवं ता सहित से मानकर स्पेसीज मध्ये प्रोपागेशन करूची। तेणु some 65 billion years ago the extinction of the dinosaurs presented an
evolution opportunity to the teeny mammals that coexisted with the giant creatures. तो देखिछ पृथ्वी पृष्ठ रे एमिति एक समय थिला जो पीरियड को हम जुरासिक पीरियड कहूछु से समय रेप्टिल गोल्डन रेप्टिलियन एज थिला एवं रेप्टाइल माने लग्जरियसली ग्रोथ नउतले तंकर पॉपुलेशन अधिका थिला से माने पृथ्वी पृष्ठ रे डोमिनेट करथिले सेतोले मामल जो माने आसुथिले वेरी स्मॉल मामल्स आस्ते आस्ते फॉर्मेशन हेइथिले सेमान को जाइगोटिक फिगर नथिला आज लाइक एज रेप्टाइल्स तनु से दृष्टि से माने बहुत कष्ट दिस्तुथिले तापर से माने विलुप्त हला फल रे आज मामल माने प्रत्येक धरा पृष्ठ रे निजको स्वतंत्रता प्रकाश करि पारि छथि हला तनो द mammals previously insignificant developed from a relatively few groups to hog varieties of species that fill the niches that were suddenly in geological terms that is available. I mean, is available of the species. Okay, the animals that could be live in trees due to living in the trees they call as the arboreal. On the grasslands they are generally terrestrial, and some mammals also be present in the water bodies like whales, dolphins, etc. And in water they call as the aquatic animals. Okay, and this is the nigging expression regarding the background of extinction and definition of the what? Your mass extinction. Again remember the definition of the mass extinction. You see, a mass extinction can be defined as a time period. Mass extinction can be defined as a time period in which large percentage of all known species living at the time goes extinct or is completely wiped out. This is the definition of mass extinction. And the term extinction means in Oriya that is called as vilupta. जे लुप्त हो गलानी लुचि गलानी जहाँ को आमे आउ देखिबा को पाउन सेही प्राणी मानन आमे कुछ विलुप्त प्राणी जो उद्भिद मानन को आउ देखिबा को पाउन कुछ विलुप्त उद्भिद सेही मानन को नै यदि आमे ताको मासिक आकारे कन्सिडर करिबा समाहार भाव रे कन्सिडर करिबा सेही शब्दटी को आमे मास एक्सटिंक्शन आकारे परिप्रकाश करिबा तले मास एक्सटिंक्शन होची एक कोन एक समय जो समय रे साधारणतः आमर जो स्पेसीज गुड़िक पृथ्वी रे आमे देखिबा को पाउछु जे माने बंची रहछन बा तिष्ठि रहछन्ती से माने एककालीन भाव रे जदि लुप्त होई जानती हला पाश्चात्य हो बा कंप्लीटली हो ताहाले आमे सेठी कहबा से माने ले विलुप्त से प्रक्रिया हला संभव विलुप्त जहा फल रे संभव विलुप्त घटिता प्राणी हो उद्भिद हो सारा पृथ्वी रो विलुप्त होई थांती ओके तनु ए डेफिनेशन को आमे एई भली भाबरे मन रखिबा ए टाइम पीरियड इन व्हिच ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑल नोन स्पीशीज लिविंग एट द टाइम गोस टू एक्सटिंक्ट और इज कंप्लीटली विप्ड आउट से माने आस्ते आस्ते विलुप्त होचंती बा संपूर्ण रूपे विलुप्त हो जाउचंती एई मासिक आकार रे एमान कहउछु मास एक्सटिंक्ट ओके थैंक यू।